So let us discuss about this problem now. The question is, in the setup zone, the string is inextensible and light. Inextensible means it cannot be stretched. Light means it is massless, no mass, mass zero. There is no friction at the axles of the pulley. So these are the axles. These are the axles of the pulleys. So no friction there. But friction between the string and the pulley wheels is sufficient to prevent slipping. But all the pulley on its surface is rough enough to prevent slipping of the thread over it. All the pulleys are light except the pulley P. Except this pulley, this pulley, this pulley, this pulley is light. Light means massless, mass zero. Pulley P, which has whole of its mass M concentrated in its axle. Whole of the mass of the pulley is concentrated at its axle. Axle is at the center of the pulley. Initially, the block B of mass capital M, mass of the block B is capital M, is on the ground, and the block A is held at rest with a support. So how much minimum mass should the block A have? You have to select the mass for A, so that after releasing it, when you remove the support, the block B starts rising. So question is emphasizing on minimum mass of A, block A. So minimum mass means we should select the mass of the A block in such a way so that when the block B starts rising because of it should not accelerate, but it should go up with the constant velocity. Because when it accelerates, the block A mass will be more than the minimum mass. So minimum mass condition is the mass of A when the B starts moving up with constant velocity. No net force on B system. So let us work on this. First important thing is that P is having all its mass concentrated at its axle. Axle is passing through the center of the pulley. And the surface is friction, is having the friction, means rough. So because of that, in such situation, we know that the tension in the thread, though the thread is massless and it is a single thread, but the portion of the thread, this one, will have a different tension than these threads. So if we say that here it is, the tension in the thread is T1. So tension in this thread will be T2. Why it is so? Because the pulley has to rotate and this pulley has the mass. Okay, so so the net torque will rotate it, and because of this rotation, the acceleration in A will set up.
Now this side the thread is having tension T2, so here to here the thread is massless, so this will also be having the tension T2. This pulley is massless, so this portion of the thread will also be having the tension T2. So here also the tension T2, here also the tension T2. This will have gravitational pull MAG. This will also have a gravitational pull MBG. Contact force, normal force NB. Let us say A is coming down with acceleration, A subscript A. P is coming down with acceleration, A subscript P. This one, as we said, to keep this A minimum, this will lift with constant velocity, so no acceleration. So acceleration of B 0. In the question, it is giving all the mass m of Pulley P concentrated at its axle. Means mass m is here. Okay. So when we take the moment of inertia or rotational inertia of the pulley about its axle, let us give the name of this axle point O. So rotational inertia about point O will be 0. Why? Because all the mass is concentrated here. And we know that moment of inertia for any particle about this point. Suppose we say a particle of mass m is r distance away from this point and the axis passing through this point is like this. This one is having m. So about this, the rotational inertia of particle B will be mr square. Here, but in this case, whole mass is at O only. There is no r. R is 0. So I naught is 0. Now we apply the torque. Now we apply the torque on, we write the formula for torque on Pulley P. Okay. So if we say this is r distance,
this will also be r distance. So total torque across O point will be r T1 in which direction? Anti-clockwise, plus r T2 clockwise, and this is equal to I naught into alpha by formula. But your I naught is 0, so this will be equal to 0. So your RT1 anti-clockwise, when we turn the direction of it, so this will become minus. So from here we got T1 is equal to T2. This is one information we got. So it means tension throughout thread is same and equal, that T1 is equal to T2. So now we make the block diagram of this system. Okay, and we show the forces acting on it. In this thread, is T2, T2, MVG, gravitational pull, normal contact force NB, acceleration for satisfying A to be minimum, AB should be 0. So we should write the equation of motion for this. In the upward direction, T2 plus T2, so 2T2. In the upward direction, NB. In the downward direction, NBG. Acceleration, AB. Since the question is that block has to leave the ground, so means it will leave the contact from the ground. So NB will become 0, so this will become 0. So our equation will become 2 plus 0 minus MBG, and AB we already know that it is 0, so this side will become 0. So your T2 will become MBG by 2. So second information we got this. So let us study for Pulley P now.
the force acting over here is the tension force. Force acting over here is tension force. Force acting over here is tension force. Here the tension force is T2. So we will write T2. Here it is T1, but T1 is equal to T2. So we can write this also as T2. Here it is T2. So we should write T2. And one more force is working over here. That is your mass of the pulley into G, gravitational force. Acceleration of pulley, we have taken it as A subscript P. So we will write the equation now in the downward direction. All the forces 2T2, T2 plus T2, 2T2 plus mass of the pulley into G in the upward direction. So minus T2 is equal to mass of pulley into acceleration P. So T2 is equal to T2 plus MPG but T2 we have already calculated over there. Mass of the block B G by 2. Therefore, acceleration of Pulley P is mb upon 2 mp plus 1 into G. This in bracket is a quantity which is greater than 1, means this whole quantity is greater than G. But in Earth gravitational field, if you don't have any external power source, the maximum acceleration an object can achieve is G. In this setup, there is no external motor or anything is attached which can accelerate the pulley more than G. So maximum acceleration that the pulley P can achieve is equal to G. So we should say that the maximum possible AP should be equal to G. So let us say that it is G now. So if you use this equation over here, means AP is equal to, if you use this value over here in this equation, so you will get 2T in place of AP, it will be G. Cancel, cancel. So your T2 is equal to 0. So T2 is 0, so hence, and we have proved already that T1 will be equal to T2. So T1 will also be 0. Means there is no tension in the strings anywhere. So if it does not have any tension, T2 is equal to 0, 0. So there is no upward force to lift this pulley. This pulley. If this pulley will not lift, the block B is attached to this pulley. So B will also not
lift up. It will not start rising. So whatever the mass, see, and this equation, so what we have got is independent of the mass of the block A. So means whatever block, so whatever mass for A you choose, whether it is very large or whether it is very small, for anything and everything, the B will not rise because there is no tension force, because this tension force only could have lifted this B up. So now since there is no tension force is absent, so A will only experience the force MAG, because tension force is 0, this is 0. So it means acceleration of A will be equal to G. So both the pulley and the A will start free falling in the Earth's gravity field with acceleration G. So initially both was at rest, and when the support lifted, both of these started with acceleration G. So these two will move together downwards with acceleration G. So no change in this thread length. So if there is no change in this thread length, means there is no motion of the thread across or over the pulley P. So if there is no motion over the pulley P, so this will not rotate. P pulley will not rotate. One thing we have already proved, that whatever mass the block A has, the block B will not rise. Okay, and these two are moving together, so this pulley will not move. But when it is coming down together, this portion of the thread which is attached to pulley P will come down. So for that, the motion will set up in this thread section of the thread. So once the motion set up, this pulley will not allow the slipping of the string over it. Okay, so this pulley and this pulley will rotate, one thing. And this portion of the thread also is in motion. So this pulley will also rotate, because the motion will be in this portion of the thread as string as well. So this will also rotate. So pulley P moves downwards without rotation of its wheel, while wheels of all the other pulleys rotate. So this answer will also be correct. So C and D will be your right choice. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये सेटअप है, इसमें ब्लॉक बी है जिसका मास कैपिटल एम है, ये जो पुली पी है ये मासलेस नहीं है, इसका मास स्मॉल एम है, और इस पुली का पूरा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है इसके एक्सेल पे। तो किसी भी पुली का एक्सेल कौन सा होता है, उसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे एक्सेल पास होता है, एक्सेल शाफ्ट पास होता है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये जितने भी एक्सेल्स हैं फ्रिक्शनलेस हैं, बट इसके ऊपर जो सरफेस है पुली का, जो ग्रूव बना हुआ है जिससे थ्रेड पास कर रहा है, वो रफ है, वो थ्रेड को स्लिप होने नहीं देता है। इट इज नॉट अलाउइंग द थ्रेड टू स्लिप होने नहीं देगा। तो जब भी ये अगर थ्रेड का मोशन सेटअप होगा ओवर द पुली, तो उसको रोटेट करेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस ए मास को मैं कितना सेलेक्ट करूं जिससे आपका ब्लॉक बी जो है इनिशियली ये रेस्ट में है बाय गिविंग अ सपोर्ट, लेकिन बोलता है कितना मास इस ए का ये सेलेक्ट करें कि जब आप सपोर्ट हटाते हैं तो ये नीचे मूव करना शुरू करेगा
तो ये इसको लिफ्ट करेगा, बी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया। चलिए भाई, ये इसका मिनिमम मास मुझे सेट करना है। तो मिनिमम मास जब मैं ए का सेट करूंगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, बी का जो है मोशन अगर होता भी है ऊपर की ओर सेटअप होता है, जो अभी हमें पता नहीं है कि वेदर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होता भी है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाए फॉर द मिनिमम मास कंडीशन। अब क्या है कि इस पुली का अपना एक मास है, इस पुली में जिसके ऊपर से थ्रेड पास कर रहा है वो सरफेस रफ है, तो मास और रफनेस की वजह से हमें पता है कि इस साइड का टेंशन जो थ्रेड का इस तरफ का पोर्शन है और इस तरफ के पोर्शन में टेंशन अलग अलग होगा। तो हमने बोला इस साइड पे टेंशन T1 क्रिएट होता है और इस तरफ जो है T2 क्रिएट होता है। अब ये जो थ्रेड है ये कंप्लीट थ्रेड मासलेस है, तो यहाँ से यहाँ भी T2 होगा। ठीक है, अब ये जो ये पुली है इसका मास जीरो है, तो मास जीरो है तो मुझे पता है कि यहाँ भी उसका टेंशन T2 होगा, तो यहाँ भी टेंशन T2 होगा, फिर यहाँ भी टेंशन T2 होगा। ठीक है, तो ये वाले सेक्शन में कहीं पे भी थ्रेड का या स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो T2 होगा। अब इसका हम लोग इसके अक्रॉस एक्सेल के क्रॉस टॉर्क ले रहे हैं पुली पी का। ठीक है, तो पुली पी का हम लोग टॉर्क लिखेंगे, तो टॉर्क अबाउट ओ ये आर इंटू T1, आर इंटू T2, आर इंटू T1 इसको क्लॉकवाइज, देखिए आर है T1 है तो इसको क्लॉकवाइज की ओर रोटेट करेगा, आर इंटू T2 का टेंडेंसी होगा उसको इस तरह से रोटेट करने का। लेकिन ये पूरा चीज़ कह रहे हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ए पी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है इधर का टॉर्क ज़्यादा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क इज हायर देन क्लॉकवाइज टॉर्क, तो हमने वो लिखा। ठीक है ना, टोटल टॉर्क ये जो मैं लिख रहा हूँ ये दिखा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आर टी वन की टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की है, ये R T2 की क्लॉकवाइज की ओर है, तो ये आई नॉट अल्फा होगा अबाउट दिस रोटेशनल इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन बाय फॉर्मूला। बट आई नॉट विल बी जीरो क्योंकि पूरा का पूरा मास जो है पुली का वो यहाँ पे है, एक्सेल पे ही है। तो हमें पता है किसी भी मास का रोटेशनल इनर्शिया जो होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो जब r डिस्टेंस उससे दूर है तो mr² होता है, अगर पार्टिकल है m उसकी जिसका मास m है। तो यहाँ तो इसके अबाउट ही ले रहे हैं तो r आपका जीरो हो जाएगा, तो आई नॉट जीरो होगा। अब आई नॉट जीरो होगा तो इससे R T1 माइनस R T2 आपको ये मिल जाएगा, वो जीरो होगा तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो ये जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया तो इससे मुझे पता चल गया कि पूरे थ्रेड में हर जगह टेंशन सेम है, T1 इज इक्वल टू T2 है। ठीक है, तो अब मैंने इस पोर्शन को जो ब्लॉक बी से जो अटैच्ड है उस वाले पोर्शन का ब्लॉक डायग्राम बनाया। तो ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे कौन सा टेंशन फोर्स दिखा रहे थे हम लोग, T2 दिखा रहे थे, T2 दिखा रहे थे। हम लोग यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि ब्लॉक बी पे MBG लग रहा है, जब तक ये कांटेक्ट पे है ग्राउंड में उस समय तक NB लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स NB, दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बट इसका एक्सेलरेशन जीरो है बिकॉज वी सेट कि इसको मिनिमम सेट करना है, तो मिनिमम के लिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहिए। तो अब मैंने इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, T2 प्लस T2 2T2, NB भी ऊपर की ओर लग रहा है तो प्लस NB माइनस MBG जो इस पे जो वेट है वो लिख दिया, MB इंटू AB लिख दिया। लेकिन जब ये कांटेक्ट छोड़ दिया है, जस्ट छोड़ दिया है ग्राउंड से, तो NB जीरो हो जाएगा, तो NB को हमने जीरो डाल दिया। एक्सेलरेशन ऑफ B जीरो है तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड का कंप्लीट थिंग जीरो हो जाएगा, तो हमें 2T2 माइनस MBG इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो T2 हमारा मिल गया MBG/2 एंड दिस इज इक्वल टू T1 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 है।
ठीक है। अब मैंने पुली को लिया, पुली पी जिसका मास पुली पी इज हैविंग द मास, तो उसका हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बना दिया। तो ब्लॉक डायग्राम से क्या लग रहा है पुली पी पे, ये वाला देखिए, ये थ्रेड की वजह से टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, वही T2 है जो T2 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे T1 लग रहा है, बट T1 इज इक्वल टू T2 है, तो हम लोग उसको T2 से भी दिखा सकते हैं। इस तरफ तो T2 लग ही रहा है, तो T2 लग रहा है। ओके, और इसका वेट अब यहाँ सेंटर से काम कर रहा है MPG, और हमने बोला हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो AP है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब इसके लिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑल द फोर्सेस, T2 प्लस T2 2T2 प्लस MPG, और अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस T2 इज इक्वल टू MP इंटू AP। तो इससे मैंने जब T2 का वैल्यू MBG/2 डाला तो AP का वैल्यू मुझे ये मिल गया। बट ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं इन ब्रैकेट 1 से ग्रेटर देन है, तो मतलब ओवरऑल जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली P का है वो ग्रेटर देन G है। लेकिन ग्रेटर देन G हो नहीं सकता है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में मैक्सिमम एक्सेलरेशन G ही होगा, अनलेस और अनटिल आपके पास कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स अटैच्ड हो जो इसको ज्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसीलिए AP इज इक्वल टू G। तो जब AP इज इक्वल टू G है तो हमारा ये इक्वेशन क्या टर्न हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, AP की जगह G रख दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, तो T2 आपको 0 मिल गया। तो T2 इज इक्वल टू T1 है, तो T1 भी 0 मिल जाएगा। तो इट मीन्स इस थ्रेड में कोई टेंशन नहीं है। जब आपने इससे सपोर्ट हटाया था, जब रिमूव करना शुरू किया, थ्रेड में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन 0 है। अब इस वाले इसमें टेंशन 0 है, तो यही तो टेंशन फोर्स इस यूनिट को उठाता, तो ये है ही नहीं इसमें टेंशन, इसके ये वाला फोर्स एब्सेंट है, तो बी कभी नहीं मूव होगा, बी विल नॉट मूव एट ऑल, चाहे ए का कोई भी वैल्यू हो, चाहे ए एकदम स्मॉल हो चाहे बहुत बड़ा हो, बी विल नेवर लीव द ग्राउंड, है ना। कभी ग्राउंड को वो छोड़ेगा नहीं, ग्राउंड को पकड़ के ही रहेगा, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, तो टेंशन फोर्स 0 है। ठीक है, तो सी वाला पार्ट आपका एक आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। पुली P moves downward without rotation of its wheel while wheels of all the other pulleys rotate। अच्छा, अब क्या है कि इनिशियली जब यहाँ सपोर्ट था तो ए भी रेस्ट में था, पी भी रेस्ट में था, सारा सिस्टम रेस्ट में था। जैसे ही आपने सपोर्ट हटाया, पी भी जी एक्सेलरेशन से फॉल करना शुरू किया, ए भी जी एक्सेलरेशन से फॉल किया, क्योंकि टेंशन नहीं है, तो ए विल एक्ट लाइक ए फ्री फॉल बॉडी, तो जी एक्सेलरेशन से फॉल किया, तो दोनों साथ में जी एक्सेलरेशन से फॉल करना शुरू किया। तो ये वाल इन दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है ए और पी के एक्सेल का, हाइट जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो मतलब ये थ्रेड का जो लेंथ है, जब दोनों साथ साथ गिर रहा है तो ये थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो ये थ्रेड का लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इस पे जो थ्रेड है यहाँ से यहाँ, इसमें कोई मोशन नहीं सेटअप होगा, कोई मोशन सेटअप नहीं होगा, तो ये वाला आपका पुली रोटेट नहीं होगा। तो, तो पुली P मूव्स डाउनवर्ड विदाउट रोटेशन ऑफ इट्स व्हील, तो ये तो करेक्ट है। अब क्या हो रहा है, तो ये जब नीचे आ रहा है पुली P, तो इसके इस एंड से ये वाला थ्रेड जो है कनेक्टेड है, तो ये भी जी से नीचे आएगा। तो जी से नीचे आएगा तो इस वाले थ्रेड में, कंप्लीट थ्रेड में मोशन सेटअप हो जाएगा, इस वाले यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से इस सेक्शन से इस सेक्शन से इस सेक्शन तक में मोशन सेटअप हो जाएगा। तो मोशन सेटअप थ्रेड होने की वजह से ये, क्योंकि कह रहा है स्लिप नहीं होना चाहिए थ्रेड, ये पुली इतना रफ है कि स्ट्रिंग को स्लिप नहीं होने देगा इसके सरफेस पे, तो इसको रोटेट होकर ही आ सकता है। तो ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा,
और इसके थ्रू भी क्योंकि मोशन है तो ये भी रोटेट करेगा, तो ये डी ऑल्सो विल बी करेक्ट।